Microsoft Azure DevOps and how we can integrate in the Microsoft Azure DevOps in our software development circle lifecycle. So this is a little bit introduction about me. I'm Fahad Ashiq, MSP Beta from GC University Lahore, community lead, Microsoft Community Lahore, founder at Sunlo Community and facilitator at Technology. As I've also delivered the session in my last event, which will be held at University of Lahore. तो आज का जो हमारा एजेंडा है टॉक का उसमें जो है हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज डेवऑप्स, डेवऑप्स फेजेस, डेवऑप्स के टूल्स, डेवऑप्स के एडवांटेजेस, स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर डेवऑप्स एंड डेवऑप्स इंटीग्रेशन. So these are the 6 modules we will be discussed in our virtual event today. So how many of you would know have knowledge about what is DevOps is, like what the term DevOps is? Kindly acknowledge in the chat box. साथ काइंडली मेक श्योर आप बता दो मेरी आवाज़ जो है वो आ रही है. Yeah, we can hear you. ठीक है, ठीक है. So yes, we have a little bit introduction about DevOps. We have discussed about our SDLC, software development lifecycle. DevOps is a version control system like GitHub, but DevOps में हम why we prefer Microsoft DevOps rather than GitHub or GitLab or rather than other version control system. And first the topic we have to discuss what is version control system. Version control system provides you a server to host your code on a web domain, on a web level, through which every member of the team can access through a web platform, right? सो इसके लिए हमारी कुछ टर्म्स होती हैं. अब एक एंटरप्राइज लेवल पे अगर जब आपने सॉफ्टवेयर बनाना होता है तो उसमें हम एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को जो है वो डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर कुछ हम वाटरफॉल मॉडल्स को अडॉप्ट करते हैं. कुछ हमारे पास मॉडल्स होते हैं जिनको हम अडॉप्ट करके एक सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करते हैं. उसमें हमारे पास वाटरफॉल मॉडल होता है, स्पाइरल मॉडल होता है, एजाइल मॉडल होता है. एक एंटरप्राइज लेवल कंपनीज में जब एक सॉफ्टवेयर डेवलप होता है तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर 7 और 6 स्टेजेस का एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल रिक्वायर्ड होता है, जिसमें हमारा एक एंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन जो है वो हम डिज़ाइन करते हैं. So there are a number of models available in the market, but आजकल के जो हमारे सॉफ्टवेयर बनते हैं एंटरप्राइज लेवल के, बट इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर कि हाउ दे वांट टू डेवलप देयर सॉफ्टवेयर. So it all depends on our developer team or our customer need. So there are a number of models available for developing a complete enterprise level application, but I will discuss about the waterfall model and agile model. These are the two basic models we adopt for software development. So first of all, I would like to tell you about what is waterfall model, what is agile model, what is the meaning of DevOps, Azure DevOps, and what is the need of DevOps. Because इस सेशन में मैंने आपको Azure DevOps की ही चीज़ों के बारे में बताना है कि how you will be integrate yourself to learn about the DevOps. So firstly, what is waterfall model? Waterfall model is an example of sequential model in which the 7 phases of software development lifecycle, which is requirement analysis, design, implementation, test, maintenance, and deploy. So these are the 6 stages. I have already told you about the 6 stages. हम waterfall model में जो हमारी हर stage होती है वो तब तक अगले next phase में नहीं जाती जब तक हमारी unless and until हम अपनी previous जो stage है उसको complete नहीं कर लेते, right? So it will take you can say a major drawback in the time development, in our प्रोडक्टिविटी, बिकॉज वाटरफॉल मॉडल में हर स्टेज को एक स्पेसिफिक टाइम होता है कंप्लीट होने के लिए. जब तक वो स्टेज कंप्लीट नहीं होती वी कैन मूव टू द अदर स्टेज ऑफ आवर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. सो वाटरफॉल मॉडल इज कॉल्ड टू बी सिक्वेंशियल मॉडल, जिसमें हर चीज़ के लिए एक हम प्रॉपर सीक्वेंट डिफाइन करते हैं और उस सीक्वेंट में उस प्रोडक्ट उस मॉड्यूल को कंप्लीट होना होता है. अनलेस एंड अनटिल जब तक वो मॉड्यूल कंप्लीट नहीं होगा वी कैन नॉट मूव फर्दर टू डेवलप आवर सॉफ्टवेयर. बिकॉज एक एंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन जो है उसमें हमारे पास हर चीज़ जो है एक रिक्वायरमेंट एनालिसिस उस प्रोडक्ट का उस रिलेटेड प्रोडक्ट से हमें चाहिए होता है. उसके बाद हम उसको डिज़ाइन करते हैं कि हाउ वी कैन मेक द यूजर इंटरफेस, हाउ वी कैन डिप्लॉय द बैक एंड ऑफ आवर एप्लीकेशन.
and then we can implement the coding stacks we have, what we will be implement our design, हम उसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे, कोडिंग कौन सी लैंग्वेज प्लेटफॉर्म हम यूज़ करेंगे, ये सब डिज़ाइन जो है डिसाइड करना होता है हमारी डेवलपर टीम में, राइट. So this is all about the waterfall model. It is one phase starts only when the previous phase is incomplete. जब तक हमारा एक मॉडल या मॉड्यूल कंप्लीट नहीं होता, हम वाटरफॉल मॉडल में अपनी एप्लीकेशन को अगले मॉड्यूल में नहीं कन्वर्ट कर सकते. So this is the stages I have told you about. These are the analysis, design, code, test, display, and maintenance. These are 6 stages I have also told you about. So why we prefer agile development model rather than waterfall model? There are a number of already available models in the market. So agile development model also type of incremental model. Software development is developing incremental rapid circles, right? इसमें एजाइल मॉडल में हमारे पास कस्टमर फीडबैक हर स्टेज के बाद इंक्लूड होता है, बिकॉज एट द एंड अगर आपकी प्रोडक्ट में आपका कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है, अगर आप एक एंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन बना रहे हैं और उसमें आपके पास जो है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन नहीं है, सो you cannot further move or you cannot further be produce the enterprise level applications for your customers. So we prefer agile development model for developing our applications. In agile model development model, in each sprint, what is sprint? Sprint is called to be a one stage of our cycle to develop a life cycle, right? If I would I will tell you about analysis is in one sprint, design, code, test, display, and maintenance, right? These are the 6 stages. Each stage is called to be a sprint because everything has to be designed in their required time. एनालिसिस के लिए हमारे पास एक रिक्वायर्ड टाइम होता है, डिज़ाइन के लिए हमारे पास एक रिक्वायर्ड टाइम दिया जाता है, हमें कोड के लिए डेवलपर टीम को एक रिक्वायर्ड टाइम दिया जाता है, टेस्ट के लिए जो है वो हमें प्रोवाइड किया जाता है कि आपने अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करना है तो उसके लिए कितना टाइम आपके पास होगा, फिर डिस्प्ले और मेंटेनेंस. सो ईच फेज के बाद हमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन या कस्टमर फीडबैक आता है, जिसकी वजह से हम उसको उसी स्टेज पर चेंजेस कर लेते हैं रेदर देन टू गो थ्रू ऑल द स्टेजेस. एंड जो एट द एंड होता है हमें उस पर रेगुलेट नहीं होता कि यार तब हम इसको अगर रेस्टिफाई कर लेते हैं जो हमारा प्रॉब्लम आ रहा है, सो वी कैन नॉट बी, हमारा जो टाइम लगा है एक प्रोडक्ट बनाने में तो वो हमारा जो है वो वेस्ट ना होता. तो एजाइल के भी वही रिक्वायरमेंट्स हैं, बट इट इज़ फार देन बेटर देन यू कैन से टू बी डिप्लॉय रेदर देन वाटरफॉल मॉडल. सो मीनिंग ऑफ डेवऑप्स. डेवऑप्स बेसिकली जो है वो हमारे एक एंटरप्राइज लेवल की सॉफ्टवेयर कंपनीज जो होती हैं उनमें कंसीडर किया जाता है, दो टीम्स को जो है ये कॉम्बिनेशन करता है. इट्स अबाउट डेवलपमेंट टीम एंड द ऑपरेशन टीम. सो दीज आर द मेन टीम्स of any software company. As you can see in the slide also, DevOps is an enterprise level software development phase used to mean a type of agile relationship between development and the IT operation. The goal of DevOps is to change and improve the relationship by advocating better communication and collaboration between these two business units. So these departments are called to be business units in a software company. इसमें हमारी डेवलपर टीम जो होती है वो हमारा पूरा कोड करती है एप्लीकेशन के बारे में कि हमारी जो एप्लीकेशन होगी उसका पूरा डिज़ाइन जो है वो डेवलपर टीम में था. ऑपरेशन टीम जो है वो उसको टेस्ट करती है, डिप्लॉय करती है, मेंटेन करती है, और जो इस चीज़ को हम मेंटेन करते हैं वो हम एक टूल के जरिए जो है उसको हम सारा जो है वो मैनेज करते हैं, उसको हम कहते हैं Azure DevOps. Like we have a major other version control system like GitHub or GitLab, all these. But why we prefer Microsoft Azure, मैं इसका जो है आपको बाद में जो है इसके जो है वो बेनिफिट्स जो है वो जब मैं इंटीग्रेट करवाऊंगा आपको प्रोजेक्ट तो बताऊंगा साथ. So what is DevOps? It's a pictorial representation, developers and tester plus IT operations. सो Azure DevOps जो है वो फॉर्मली कॉल्ड VSTS. अगर किसी ने काम किया हुआ है, किसी का डेवलपमेंट से थोड़ा सा भी कोई बैकग्राउंड है तो उसको ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी जो है वो समझ आ रही होंगी. बट मोस्ट ऑफ़ यू आर द स्टूडेंट्स एंड टू आप जो है वो इस इवेंट को इसलिए अटेंड करें कि आपको डिफरेंट जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी स्टैक्स हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज में यूज़ हो रहे हैं तो हम उसको किस तरह इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो Azure DevOps इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉमिसिंग डोमेन जो कंपनीज अडॉप्ट कर रही हैं अपने सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए डेवलपर और ऑपरेशन की टीम को. सो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इसमें आप वाकई में इसमें एक इंजीनियरिंग जो है इसमें
जॉब्स डोमेन में काफ़ी अवेलेबल है, आप इसमें अपने आप को स्किल करके अपनी जॉब सिक्योर कर सकते हैं, आप इसको एज अ कैरियर में भी लेके जा सकते हैं। सो इट्स जो इस स्लाइड में लिखा हुआ है, होस्टेड सर्वर प्रोवाइडिंग डेवलपमेंट एंड कोलैबोरेशन टूल, Azure DevOps Service, Microsoft product that provides version control, reporting requirements management, project management, automated builds, lab management, testing, release management capabilities. It covers the entire application lifecycle and enables DevOps capabilities. सो आपको एक ही प्लेटफॉर्म में अपने सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, अगर आपने किसी को कोई टास्क असाइन करना है, अगर किसी ने कोड डिप्लॉय करना है, अगर किसी ने कोई चेंजिंग करनी है, अगर किसी ने कोई सजेशन देना है, तो आपको Azure, Microsoft Azure DevOps एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें आप ईच एंड एवरीथिंग एक ही प्लेटफॉर्म में हर टीम का बंदा जो है वो असेस कर सकता है। GitHub is also preferable, but GitHub में हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चराइज वर्जन कंट्रोलिंग नहीं मिलती, हम उसमें सिर्फ कोड पुश करते हैं, तब पुल करते हैं और पुश करते हैं, या कोड क्लोन कर लेते हैं, उसमें हमें प्रॉपर बोर्ड्स नहीं दिए जाते कि इस कोड में किसने चेंजिंग की है या किसने क्लोन किया है, वो हम रीडमी फाइल में करते हैं, बट वो स्ट्रक्चराइज इतना नहीं है। सो द कंपनीज आर मोर एडॉप्टिंग बिकॉज चीज़ें जितनी जो हैं वो डिफाइन होती हैं, तो हर बंदे को अडॉप्ट करने में उतना ही तब ईजी होता है। सो दीज आर द बेसिक 5 मॉड्यूल्स ऑफ Azure DevOps। जब आप मैं भी आपको दिखाऊंगा जब इंटीग्रेशन करेंगे हम प्रोजेक्ट की, सो उसमें बोर्ड्स होते हैं, बोर्ड में हम जो है वो टास्क असाइन किए जाते हैं कंपनीज के जो भी टीम के जो बंदे होते हैं उनको, कि इफ समवन हैज अ प्रोजेक्ट हैज अ डिफरेंट फाइल, राइट, if we will made a enterprise level application, तो उसमें हमारे पास डिफरेंट फेजेस होते हैं, कुछ कोड की फाइल्स होती हैं, कुछ हमारे पास वेब APIs की फाइल होती हैं, वो आपकी प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। Azure पाइपलाइन है हमारी कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन और कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट जो हम करते हैं ईच एंड एवरीथिंग। अगर किसी ने भी कोई किसी कोड में चेंज किया है, वो उसे कॉन्टिन्यूस जो है वो उसको अपडेट करता रहेगा, और वो Azure DevOps में जो हमारे पास प्रोजेक्ट पड़ा होगा उसमें ऑटोमेटिकली वो अपडेट करता रहेगा, और एवरीवन कैन असेस फ्रॉम द सर्वर लिंक। आप सर्वर लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें पूरा प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन होगी कि इफ़ अ टीम हैज़ 4 मेंबर्स, तो अगर कोई रात को उस पर कंटिन्यूसली करना है तो रात मतलब सुबह उसको बाकी टीम मेंबर्स देख सकते हैं कि इसने इस टाइम इस पे काम किया हुआ है। Azure रेपोज होती हैं, रेपोज में भी हमारे पास प्राइवेट गिट रिपोजिटरीज जो हम कोड को अपने डेस्कटॉप में या अपने लोकल सिस्टम में हम गिट रिपोजिटरी से एक लोकल रिपोजिटरी बनाते हैं और एक रिमोट रिपोजिटरी होती है। रिमोट रिपोजिटरी जो है वो हमें वेब बेस प्रोवाइड करती है, हम उसको ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, और जो हमारे पास प्राइवेट या लोकल रिपोजिटरी होती है वो हमारे पास डेस्कटॉप पे या हमारी लोकल ड्राइव में जो है वो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं एनीवेयर विदाउट एनी इंटरनेट। सो टेस्ट प्लान्स होते हैं हमारे पास, और इसमें Azure आर्टिफैक्ट्स होते हैं। सो दीज आर द 5 बेसिक मॉड्यूल्स ऑफ Azure DevOps। जब आप इस टूल को यूज़ करेंगे तो इसमें चीज़ें जो हैं वो काफ़ी आगे सीखने वाली हैं अगर आप इस चीज़ को परस्यू करना चाहते हैं। सो व्हाट इज़ द नीड ऑफ Azure DevOps? दिस इज़ द बेसिक क्वेश्चन कि इसमें जो है Azure DevOps की हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। So it's effectively a rebranding of Microsoft Visual Team Service. Before this, I guess it's about 2016. Before this, ये जो है Microsoft Azure VSTS के नाम से जो है ये मतलब जाना जाता था, और इसको कंपनीज में इस तरह यूज़ किया जाता कि we will cloud our code or we will deploy our code on the server like VSTS, which is the online version of Team Foundation server. That's all. But what we do, what on earth does Azure DevOps VSTS TFS do? So originally a core source management where teams could share and work on code collaboratively, like कि everyone has a web based एक server हमें provide किया जाता है पूरी टीम को, इसमें हम collaboratively जो है वो हम work कर सकते हैं। So TFS grew to become a platform where development projects could be managed, tested and released. So the next modules we have to discuss is DevOps Phases। केस में DevOps में हमारे पास कितने फेज होते हैं? इट्स continuous development, continuous integration, continuous testing, continuous monitoring, continuous feedback, continuous development and continuous operation. What does the term continuous mean? Continuous mean कि each and everyone has access wherever he will be reside, right? So इसके लिए हमें कहीं की जरूरत नहीं होती कि हमें एक जगह पर या एक मीटिंग पर बैठकर 4 के 4 बंदों ने, अगर एक डेवलपमेंट टीम है और ऑपरेशन की टीम ने 5 के 5 बंदों ने बैठकर एक ही जगह पर पूरी एप्लीकेशन के मॉड्यूल्स को डिस्कस करना है। हम इसको ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म देता है जिसमें हम इसमें जैसे मैंने आपको बताया Azure बोर्ड्स होते हैं जिसमें हम असाइन कर देते हैं कि ये बंदा जो है वो इस टास्क पे काम करेगा, और अगर कोड ने किसी ने इंटीग्रेशन किया है तो उसका नाम और उसकी आईडी से पता चलेगा कि उसने रात को इतने बजे काम किया या सुबह उसने ये डिप्लॉयमेंट की, ये चेंजिंग की। सो इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चराइज्ड वे ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर, दैट्स ऑल। So these are the explanations or continuous development seeks to automate
किसी ने भी अगर कोई डेवलपमेंट कर रहा है, कोई चेंजिंग कर रहा है और वो उसको साथ साथ जो है वो इस पे अपडेट कर रहा है, तो वो कंटिन्यूस डेवलपमेंट की फेज में आता है। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का मतलब है इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंटिन्यूस इज द प्रैक्टिस ऑफ मर्जिंग ऑल डेवलपर्स वर्किंग कॉपीज टू शेयर मेनलाइन सर्वर्स एट अ डे, राइट। सो अगर कोई इंटीग्रेट कर रहा है, किसी को टेस्ट कर रहा है, किसी ने कोई एप्लीकेशन, किसी ने भी कोई कोड में चेंजिंग किया, उसको देख रहा है कि अगर मैं इसको इंटीग्रेट करके देखता हूँ इज इट वर्किंग और नॉट। सो अगर किसी दूसरे बंदे को एरर पता चल रहा है तो वो उसको उसी टास्क में या उसी डोमेन में बताएगा कि यार यहाँ पर चेंजिंग है, आप इसको चेंजिंग कर लो। सो जब भी एक एप्लीकेशन हमें डेवलप करनी होती है तो उसमें रेदर देन हम उसको बिल्कुल एंड पर एंड फेज पे ले जाकर जब हमने एक डिप्लॉय करनी होती है एप्लीकेशन, उसको टेस्ट करें, हम उसको डिफरेंट मॉड्यूल्स में अगर टेस्ट करेंगे एप्लीकेशन डेवलप करते हुए, सो इट्स अ मोर वैलिड अप्रोच टू डेवलप एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन। सो यस, एंड अगेन दिस इज द कंटिन्यूस टेस्टिंग जो है हम उसको करते हैं। हमारा हार्ड मॉड्यूल के पास टेस्ट होता है कि अगर हमने एक लॉगिन और साइन अप का फंक्शनलिटी की है तो हम उसको टेस्ट करते हैं कि वेदर इट इज़ गोइंग टू बी डिप्लॉय राइट और नॉट। सो अगर हम उसको टाइमली चेक कर लेंगे तो रेदर देन हम जब पूरी एप्लीकेशन एक डेवलप कर लेंगे, हम उसको तब चेक करें उसमें एरर आए, तो हमारा टाइम जो लगा है, जो हमारी मेहनत लगी है, वो जो है वो वेस्ट हो सकती है। सो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, जो हमारी मॉनिटरिंग टीम होती है या हमारे एमडी या कुछ हाई पोस्ट के होते हैं सॉफ्टवेयर कंपनीज में, तो वो इसको कंटिन्यूस मॉनिटर कर रहे होते हैं। सबके पास एसेस होती है इस Azure DevOps टूल की। सो कंटिन्यूस डेवलपमेंट and continuous operation. So there are tools commonly used in DevOps environments. These include continuous integration, as I've also told. This also the explanation. तो हमारे पास जो और DevOps tools available हैं वो Slack है, Jenkins है, Docker, Phantom, Nagios, Ansible, GitHub, and Microsoft Azure DevOps. These are the all DevOps tools we use in the major software companies. So these are the pictorial representation. मोस्ट ऑफ यू जिनका डेवलपमेंट से या कुछ इसका बैकग्राउंड है, सो उनको AWS का पता होगा, फिर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, गिट जो है हमारे पास है, फिर डॉकर्स है। दीज आर द नंबर ऑफ अवेलेबल, जिसमें एक्सपर्टीज हैं वो इस चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ एज्योर डेवऑप्स? इसका बेनिफिट क्या है, हम इसको यूज़ करते हैं बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड्स यू द बेस्ट, you can say, the technology stack tools or technology tools where we can integrate our application software. We will have to be develop the software applications for our projects. So Microsoft Azure जो है वो आपको structurized version controlling system देता है rather than other DevOps tools. So this is the main benefits of Microsoft Azure DevOps. एंड माइक्रोसॉफ्ट एज्योर डेवऑप्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इसको काफ़ी सॉफ्टवेयर हाउस जो हैं वो अडॉप्ट कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। इसकी जॉब मार्केट भी काफ़ी अच्छी है। सो दिस इज़ द बेसिक पोर्टल ऑफ एज्योर डेवऑप्स। अब जो है मैं आपको थोड़ी सी इसकी इंटीग्रेशन बताऊंगा कि हाउ वी कैन इंटीग्रेट द एज्योर डेवऑप्स टूल। अगर हमने कोई एक प्रोजेक्ट जो है वो लोकल अपने IDE से इसमें जो है वो अपलोड करना है थ्रू सर्वर, थ्रू लिंकिंग आवर अकाउंट, मैं आपको भी उसके बारे में भी बताऊंगा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। और अगर हमने कोई हमारे पास ऑनलाइन प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है और हमने उस पर चेंजिंग करनी है और उसको हमने क्लोन करना है अपने IDE में, तो हाउ वी कैन इंटीग्रेट। सो आई विल गिव यू जस्ट गिव मी अ मिनट। Take your time. साथ अगर आप अवेलेबल हो यार, बताओ मुझे जो स्क्रीन है वो मेरे IDE की शो हो रही है या स्लाइड शो हो रही है? काइंडली चैट बॉक्स में अगर कोई बता दे। आप लोगों को स्लाइड शो हो रही है या
Is everyone there? Slides, wait, मैं अभी शेयर कर रहा हूँ. So yes. So if you will go to the Google Chrome, go search for Microsoft Azure DevOps. Sorry, this is link. So yes, जब आप एक बेसिकली आपने कोई भी एप्लीकेशन जो है वो आपने इस पे होस्ट करनी है, या आपने सारा अपना कोड या अपना पूरे अपनी एप्लीकेशन को या प्रोजेक्ट फाइल को इस पे आपने होस्ट करना है, तो आप जब इसको सर्च करेंगे Microsoft Azure DevOps, तो you have to be go with your basic Gmail account of Microsoft. So start free. अगर आपका GitHub का अकाउंट है तो आप इसको GitHub के साथ भी साइन अप कर सकते हैं. As I have also integrate my Microsoft account with it, so जो मेरे अभी इसमें प्रोजेक्ट्स थे वो इस पे आपको शो हैं. So firstly जो है मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आपने एक लोकल आईडी से किस तरह अपने कोड को जो है इस पे होस्ट करना है. So go to this प्रोजेक्ट. मैं जो है मेरे पास एग्जिस्टिंग जो पड़ा होगा प्रोजेक्ट मैं इसको होस्ट करूंगा, आपको बताऊंगा किस तरह आपने करना है. आपको जो है वो शो स्क्रीन लाइक दिस. So this is the basic, you can say if I will open this. ये देखें, अब ये जो है मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिसपे हम हमारी कंपनी जो है वो जिसपे काम कर रही है. So ये हमारा प्रोजेक्ट जो इसमें पड़ा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे पास 5 मॉड्यूल्स होते हैं. इसमें ओवरव्यू है हमारे प्रोजेक्ट का, अबाउट दिस प्रोजेक्ट स्टैटिस्टिक्स एंड द मेंबर्स वी हैव in our development team, right? So we have a boards जहाँ पर हमने assign किए हुए हर किसी को task के, each and everyone supposed to work on this task. Like title है, उसकी ID है, assign to हमने किसको दिया, अलीम अकरम है, unassigned है, किसी को भी assign नहीं हुआ हुआ ये task, अलीम अकरम को assign हुआ हुआ, इसकी date है, और area path हमारा जो इसमें हमने project का नाम है जिसमें हमारा पूरा project पड़ा है तो वो CCC है, right? We have a repos of our project इसमें हमारे पास पूरा प्रोजेक्ट जो है वो इस पे क्लोन हुआ है. हम यहाँ से कुछ भी चीज़ जो है वो एसेस कर सकते हैं. इसमें काउंटी ऐप में हमारे पास सारी फाइल्स हैं, ठीक हो गया. उसके बाद हमारे पास इसमें लेटर्स है, जितना भी हमारा कोड है वो इस पे होस्ट हुआ है, हमारी पूरी प्रोजेक्ट जो है वो इस पे होस्ट हुआ है, और एवरीवन कैन एक्सेस जिसको ये सर्वर की ऑनलाइन एक्सेस होगी. सो वी हैव अ पाइपलाइंस जिसमें अभी हमारा कुछ भी नहीं हुआ हुआ, टेस्ट प्लान्स हैं और आर्टिफैक्ट्स हैं. सो यस, now I will share my IDE. It's about
काइंडली चैट बॉक्स में बताएं अभी आपको जो है वो Azure DevOps का डैशबोर्ड शो हो रहा है और मेरा आईडी शो हो रहा है विजुअल स्टूडियो का। काइंडली डैशबोर्ड में कुछ अटेंडेंस हैं तो वो बता दें। आई एम ट्राइंग टू शेयर माई आईडी बट आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। मैं अभी रिजॉल्व करता हूँ, जस्ट गिव मी। साद, आर यू देयर? साथ आपको इधर Azure DevOps का डैशबोर्ड शो हो रहा है और मेरा आईडी शो हो रहा है विजुअल स्टूडियो। साथ आपकी आवाज नहीं आ रही। Give me a second. Okay. Actually, the screen is too small because we are actually like quite presenting ourselves. So, yes, I can see your dashboard, Azure DevOps dashboard. Azure DevOps, right? How can I be? मैंने आईडी शो करवाना है, मल्टीपल स्क्रीन्स कैसे शो होंगी? आईडी शो ही नहीं हो रहा यार। Is there some problem? Wait, I am checking. Yes, now it's resolved, right? So this is my code, you can say, जो मैंने अभी जो है इस पे Azure DevOps पे जो है इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा। So you can say अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट ऑलरेडी आपने इस पे काम किया हुआ है या आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है तो आप उसको किस तरह इसमें Azure DevOps में होस्ट कर सकते हैं। सो इफ आई विल होस्ट माय FIP ओपन, so this is the folder I have opened। इसमें मेरी प्रॉपर पूरी फाइल पड़ी होंगी। अगर हम इसको सोल्यूशन एक्सप्लोरर खोलते हैं तो इसमें मेरे पास पूरा प्रोजेक्ट जो पड़ा हुआ है। अब मैंने इस पूरे प्रोजेक्ट को जो है माइक्रोसॉफ्ट Azure DevOps के डैशबोर्ड में होस्ट करना है एक न्यू प्रोजेक्ट बना के, ताकि अगर किसी ने रिमोटली या कहीं से भी असेस करना है इस प्रोजेक्ट को, चेंजिंग करनी है, इसमें कुछ ऐड करना है, तो वो थ्रू माइक्रोसॉफ्ट Azure DevOps इसको ईजिली इंटीग्रेट कर सके। सो as you see, you can say एज इट इज़ ऑलरेडी, ये ऑलरेडी जो है ये इंटीग्रेट हुआ है। मैं आपको नया करके दिखाता हूँ। So this is the final project I have to deploy on this. So yes, this is finally we have it. Wait, not mistaken.
सो क्लिक ऑन द क्लोन और चेक द प्रोडक्ट। अपने आप जहाँ से कोड डाउनलोड करना है अपने लोकल आईडी में, आप यहाँ पर उसका लिंक देंगे। सो जो मेरा सर्वर का लिंक है वो मैं यहाँ से दूंगा। सो दिस इज़ माय सर्वर लिंक, जो मैंने अभी रिपोजिटरी लोकेशन जहाँ पे मेरी रिपोजिटरी कोड की पड़ी हुई है, मैंने अब ऑनलाइन रिपोजिटरी से अपने लोकल आईडी में सारा प्रोजेक्ट जो है वो डिप्लॉय करना है, ताकि मैं उसमें लोकली अपने आईडी से इसमें चेंजिंग कर सकूँ। सो लोकल पाथ जहाँ पर आपने इसको स्टोर करवाना है, यू कैन स्टोर इट एनीवेयर, यू कैन म्यूजिक, और जहाँ पर भी आपको उसको लगता है आप इसको सेलेक्ट फोल्डर। It's in Azure DevOps। ये मुझसे क्रेडेंशियल्स मांग रहा है, यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट करना है। आइटन स्टूडियोज मेरे पास सीसी का प्रोजेक्ट है जिसको मैं क्लोन करूँगा। सो नेक्स्ट, एज यू कैन सी ये मेरा प्रोजेक्ट जो है वो लोड हो रहा है, वो लोकल आईडी में आ रहा है मेरी ऑनलाइन जो रिपोजिटरी में पड़ा हुआ था। इसको मैं यहाँ से, यस, दीज आर द 3 फाइल्स विच वी हैव ऑन आवर ऑनलाइन रिपोजिटरी, जो हमारे मेरे लोकल आईडी में जो है वो एग्जीक्यूट हो चुकी हैं, जिसमें 3 फाइल्स थी, काउंटी डोमेन मॉडल, काउंटी एपीआई, काउंटी टेरी लेटर्स। सो अब जो है इसमें जितनी भी चेंजिंग हैं वो मैं इसमें लोकली कर सकता हूँ। इसको अगर मैंने डिप्लॉय करना है तो आई हैव टू बी कनेक्ट इट टू द टीम एक्सप्लोरर, जहाँ से मैं इस पे जो भी मेरा वर्क होगा मैं यहाँ से इसको Azure pipelines में ये देखें, वी हैव Azure pipelines, builds, work items, pending changes, my work। और ये मेरा ऑनलाइन जो सर्वर है, जो हमने कंपनी का जो हमारा ऑलरेडी डिप्लॉय है, हम उसमें चेंजिंग करते हैं, वी हैव इट। सो दिस इज द बेसिक इंटीग्रेशन, हाउ वी कैन integrate from online repository to local ID, either we are using Microsoft Visual Studio Code, कि आपने किस तरह एक कोड होस्टिंग डोमेन से कोड को जो है वो अपने लोकल आईडी में लेके आना है और आपने उसमें से चेंजिंग करनी है। सो दिस इज़ द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया, जिसमें कुछ जो है वो लैग आया है, लाइक कुछ स्क्रीन का मसला है और आई डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम इज। सो दिस इज़ द बेसिक इंटीग्रेशन आई हैव टोल्ड यू। मैं आपको शेयर करता हूँ। तो बेसिकली जो है वो Azure DevOps का, जिस तरह मैंने आपको सारा इंटीग्रेशन का बताया, उसमें कुछ लैग्स आए हैं, कुछ स्क्रीन का प्रॉब्लम आ रहा है कि उसमें मेरा लोकल आईडी, क्योंकि मैंने मल्टीपल स्क्रीन में काम करना है, गूगल क्रोम Azure DevOps से मैंने लोकल आईडी में आना है, तो उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा बताया। सो ये जो है बेसिक साइट है जहाँ से आप इसकी सर्विसेज जो हैं वो ले सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट Azure DevOps सर्विसेज को किस तरह आपने इंटीग्रेट करवाना है, ये प्रॉपर एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम स्ट्रक्चराइज अवेलेबल है। सो व्हाट डेवऑप्स इंजीनियर्स डू एक्चुअली, सो डेवऑप्स इंजीनियर वही मैंने आपको बताया कि एक आईटी ऑपरेशन और जो हमारे डेवलपर टीम को है उनको इंटीग्रेट करवाते हैं। इसके लिए जो स्किल्स हैं जॉब मार्केट में, अगर आपने इसमें मूव करना है, इस डोमेन में आना है, वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम और आना है, तो यू हैव टू बी ए स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, बिकॉज
आपने डेवलपर टीम और ऑपरेशन टीम को जो है वो इंटीग्रेट करवाना होता है थ्रू योर प्रॉपर कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन लैग बीच में आएगा सो कुछ चेंजेस जो है प्रोडक्ट में वो एग्जीक्यूट प्रॉपरली जो है वो नहीं हो सकती। सो दिस विल लैक यू। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, कोलैबोरेशन स्किल्स अच्छी हैं, सो यू कैन मूव इन दिस डोमेन। एम्पैथी एंड unselfishness, understanding of major DevOps tools, software security skills, command of automation technology and tools, coding and scripting skills. Because if you are a beginner, because most of you are probably the students, so अगर आपने इस डोमेन में आना है तो आपके जो है वो कोडिंग स्किल जो है वो भी अच्छे होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि पूरी प्रोजेक्ट बनाने में कितना टाइम लगता है, उसमें कौन कौन से फेजेस जो हैं वो अवेलेबल होते हैं और आपने उसको टाइमली किस तरह एग्जीक्यूट करना है। सो दीज आर द बेसिक स्किल्स वी यू रिक्वायर्ड फॉर अ डेवऑप्स इंजीनियर, सक्सेसफुल डेवऑप्स इंजीनियर्स, क्लाउड स्किल्स एंड टेस्टिंग स्किल्स। एज सुन एज फार मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूँ कि ये डिपेंड करता है कंपनीज पे, सॉफ्टवेयर्स पे, कि हम इस चीज़ को अडॉप्ट करने में जो है वो कितना प्रेफर करते हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर डेवऑप्स को एक एप्लीकेशन बनाने में जो है उस चीज़ को हम अडॉप्ट करें। ये डिपेंड करता है बिकॉज मेजर जो हमारी पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जिन्हें कंसीडर होती है I2C, PureMD, नेटसॉफ्ट, और भी काफ़ी बड़ी कंपनीज हैं जो इस चीज़ को जो है वो इनकी जॉब ओपनिंग आती हैं। सो इफ़ यू आर विलिंग टू मूव इन दिस डोमेन, सो दिस इज़ द बेटर टू बी अप्रोच कि आप इसको अभी से एक्सप्लोर करना सीखें। साथ जो है आप इसको देखें कि आपने किस तरह इसको जो है वो आगे लेके जाना है अपने कैरियर में। सो दिस इज़ ऑल फॉर मी टू फ्रॉम माई साइड। होप यू ऑल विल एंजॉय दिस सेशन। कुछ लैग्स आए हैं जिसमें इंटीग्रेशन जो है वो हमारी प्रॉपर नहीं हो सकी बिकॉज में मल्टीपल स्क्रीन्स में मूव होना है लाइव, बिकॉज जो लास्ट इवेंट था वो हमारा टीम्स पर था, वो लाइव नहीं था, तो उसमें जो ईजी है हम स्क्रीन इंटीग्रेशन जो है वो ईजीली हो जाता है। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड, आपको ये स्लाइड्स जो हैं अगर चाहिए होंगे जिसमें कुछ कंटेंट जो है वो अवेलेबल है, सो मैं आपको ईमेल भी कर सकता हूँ। यू कैन रीच मी आउट जो है, मैं आपको अभी अपने ईमेल और अपना फ़ोन नंबर दे सकता हूँ जिसमें आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं कि आपने इसके बारे में अगर कुछ और जानना है या ये स्लाइड्स आपको प्रोवाइड होनी चाहिए, कुछ भी माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर डेवऑप्स या माइक्रोसॉफ्ट MSP प्रोग्राम के बारे में आपने कुछ पूछना है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। सो दिस इज़ द बेसिक, ये भी स्नैपशॉट जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं MSP के जो आप इस चीज़ को आउटग्रो कर सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जिसमें आप माइक्रोसॉफ्ट लर्न के जो हमारे पास ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेज हैं, आप वहाँ पे जाके इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। कौन कौन सी डोमेन्स की डेवलपमेंट डोमेन्स में आप जा सकते हैं। So Microsoft Community Lahore, I am also the lead. I and Saad is leading the Microsoft Community Lahore, and Muhammad Saad is also the part of the Microsoft Community Lahore. We have a group on Facebook community जहाँ पर हमारे जितने अपकमिंग सेशंस हैं, जहाँ हमने प्रीवियस काम किया हुआ है थ्रू बैक इन जनवरी 2020, आप देख सकते हैं हमारे अपकमिंग जो सेशंस हैं या हमारा अपकमिंग जितने भी प्लान्स हैं थ्रू दिस कम्युनिटी आप इसके इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो अपने डेव एसेंशियल्स आप ले सकते हैं, मैंने इसमें बताया हुआ, अपना लिंक दिया हुआ है। हमारी कम्युनिटी जो है लाहौर की वो किन किन यूनिवर्सिटी में इंटीग्रेट है, इनमें हमारे सारे एम्बेसडर्स हैं। इफ़ यू विल रीच आउट टू देम कि हाउ यू कैन बी द पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, और आप इस चीज़ को किस तरह आगे लेके जा सकते हैं, कुछ सीख के और इसको लर्न करके आप कम्युनिटी के साथ शेयर कर सकते हैं। सो दीस आर द यूनिवर्सिटीज आई मेंशन, मैं उनको बता भी देता हूँ। फास्ट है, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, GCU लाहौर से मैं और साथ हैं, लाहौर की यूनिवर्सिटी, मिनहाज यूनिवर्सिटी, PUCIT, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन कॉन्सेप्ट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, ITU, UMT, लामसर सैयद कॉलेज एंड लाहौर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। सो दीज वी हैव एम्बेसडर्स फ्रॉम दीज यूनिवर्सिटीज़। अगर आपने फाइंड आउट करना है कि कौन इस चीज़ में जो है वो इन है, सो यू कैन रीच आउट टू अस, हम आपको कनेक्ट करवाते हैं। तो आप इस चीज़ को कम्युनिटी में जो है वो इस चीज़ को आगे लेके जाएंगे। जो जिन बच्चों को नई टेक्नोलॉजी या नई स्टैक के बारे में नहीं पता, सो वो इस कम्युनिटी में आकर सीख सकें और लर्न कर सकें, बिकॉज देयर इज़ अ मेजर गैप इन आर एजुकेशन सेक्टर एंड आर इन प्रोफेशनल मार्केट। सो अगर आप अपने एजुकेशन लेवल पे राइट बिफोर योर ग्रेजुएशन, अब अगर आपको इन काफ़ी चीज़ों के बारे में पता होता है, आपको अपने इंटरेस्ट के बारे में पता चल जाए, तो आप इजीली मार्केट में मूव कर सकते हैं। बिकॉज दिस इज़ द लैक वी हैव कि हम अपने स्टूडेंट्स को जो है वो सिर्फ 4 साल जो है वो बेसिक आउटडेटेड कोर्सेज पढ़ाते हैं, जिससे उस चीज़ को, उस बच्चे को या उस स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही होती कि उसने अपने जॉब लेवल में या अपने कैरियर लेवल में कौन सी डोमेन में जाना है। सो ये सेशंस अभी कुछ इन्फॉर्मेटिव है, लाइक आई एम नॉट श्योर कि मैंने 100/100 जो है वो आपको प्रोवाइड किया है, बट आई कैन से कि मैंने आपको 50 से 60% इस डोमेन के बारे में बताया कि व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर डेवऑप्स, राइट। साद ने हमारा काफ़ी अच्छा सेक्शन दिया है अभी
REST APIs में if you are moving into the web domain तो आपको REST APIs आपको APIs के बारे में पता होना चाहिए। साद ने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है। इसी तरह हमारे डिफरेंट सेशंस होते हैं, AI पे होते हैं, फिर हमारे पास डिफरेंट क्लाउड कंप्यूटिंग पे होते हैं। So these sessions will only provide you the content, right? These are not sure to be make you a perfect or to make you a guru in these domains. ये आपको सिर्फ information से हम sessions जो हैं वो provide करते हैं। So this is the email of mine. You can reach me out to fahad.ashiq@studentpartner.com. This is my WhatsApp number. अगर आपको कुछ भी क्यूरीज है रिलेटेड टू अपकमिंग सेशन, अगर आपने इस कम्युनिटी में पार्ट बनना है, कुछ भी सीखना है, कुछ भी पूछना है, rather than in development sector or rather than ordinary things, you can reach out to me. You can reach out to us on our Facebook page, on our Facebook community. We have also on Twitter, we have also on LinkedIn. So reach out to us. कुछ भी प्रॉब्लम है, आगे जॉब लेवल में कौन सी डोमेन चूज करनी है, कुछ रिसोर्सेज हमारे पास हैं जो हम आपको आगे प्रोवाइड कर सकते हैं, आप अपने फेलो पीयर्स को दे सकते हैं, because we have decided the gap we have faced in our, like, I am about to graduate in August 2020 and I am also working in a web domain. So जो फेजेस मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में मुझे तब नहीं पता था इन चीज़ों के बारे में। सो वी हैव डिसाइडेड कि हम उस चीज़ को अभी से प्रमोट करना शुरू करें। जो बच्चे अभी ग्रेजुएशन में अभी ऑन गोइंग है जिनकी डिग्रीज, और उन्होंने उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है और किस चीज़ को आगे कैरियर में परस्यू कर सकते हैं। सो दीज सेशंस आर ऑल अबाउट टू प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट पार्टनर्स लाहौर। सो इसमें हमारे पास जितने इंटरेक्टिव पार्टिसिपेंट थे उनके लिए योर क्रेडिट्स हैं जो हम एट द एंड ऑफ द सेशन अनाउंस करेंगे। सो यू विल गेट द ईमेल ऑफ एज्योर क्रेडिट जो आप यूज़ कर सकते हैं। $100 एज्योर क्रेडिट्स हैं, आपको कोड प्रोवाइड किए जाएंगे जो हमें माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से दिए गए हैं और हम आपको आगे देंगे। आप उस पर अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग की एक्सपर्टीज़ कर सकते हैं। एज्योर क्रेडिट्स जो हैं वो आपको मिलते हैं जिसमें आप अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करके देख सकते हैं जो आप टाइमली यूज़ करते हैं और उसके लिए काफ़ी बेनिफिट होता है। So this is all for today's session. और जो है बाकी आपको जो है जिन लोगों ने इस सेशन को नहीं अटेंड किया उनके लिए रिकॉर्डिंग जो है वो पेज पे भी लाइव आ जाएगी, यूट्यूब चैनल पे भी आ जाएगी। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। जो हमारे अपकमिंग सेशन होंगे उसमें भी आप इसी तरह एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाएं ताकि हम इस चीज़ को और आगे लेके जाएं अपने और अपकमिंग सेशन में, जिसमें हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट के जो गुरु हैं या माइक्रोसॉफ्ट के वैल्यूड प्रोफेशनल या सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं, हम उनको जो हैं वो आपके लिए लेके आएँ, वो आपको डिफरेंट टेक्नोलॉजी स्टैक के बारे में बताएं। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडे आवर साइड and thank you for all the participants. So अगर कोई भी सवाल है किसी से भी रिलेटेड वो आप चैट बॉक्स में हम आपको प्राइवेटली बता सकते हैं और आपको हम ईमेल भी कर देंगे। So this is all from today's session. So thank you. Sad, let's wrap up. Are you there? Yes, I'm here. So guys, if you guys if you want to get in touch with us, or you can if you want to get in touch with us personally, you can just reach out to us on our socials, or if you want to still want to become a part of this amazing new community that we have created, you guys should definitely reach out to Saad Aslam or Fahad Ashiq. They can help you out with this, and if you want to become an ambassador, so they can also help you out in that aspect too. So that's all from my side. And if Fahad, if you want to say some words or not, but if you don't want to say anything else, so we can just wrap the session up. And yeah, that's Perfect. all from my side. Perfect. Thank you for all joining us. We'll see you in next event. Thank you. Allah Hafiz. Awesome. Allah Hafiz.